अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। क्या होता है जब कोई एक YouTube चैनल शुरू करता है एंड देन दे गो ऑन एंड दे आर सो सक्सेसफुल दैट दे एक्चुअली गेट टू मेक वेब सीरीज। आज मेरे साथ भड़ीप हैं एंड भड़ीप दैट इज द भारतीय डिजिटल पार्टी। सारंग पौला, ललित मेरे साथ है, अभय मेरे साथ है और शिखा हमारे साथ है। हाय शिखा, वेलकम टू बोल बेबी बोल। जब मैं स्क्रीनिंग पर आई थी मुझे याद है पौला ने कहा था कि इस शो को बनने में एक्चुअली 7 साल लगे हैं। Yep. So when we started Paula और हमने जब चैनल शुरू किया तब उसका पर्पस मोर देन मेकिंग यूट्यूब वीडियोस यही था कि एक हमारा नाम बच जाए, लोगों को समझ में आ जाए हम कौन लोग हैं। बिकॉज 7 साल पहले हमारे पास काफ़ी कहानियाँ थी। देयर वर लाइक लॉट ऑफ फिल्म स्टोरीज, सीरीज स्टोरीज दैट वी हैड, दैट वी यूज्ड टू टेक आउट टू पिच, और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। As an example, Shantit Kranti concept is older than our YouTube channel. Yeah. So at that time, Abhay came up with this concept and उसने बोला कि as creators I would like to collaborate with you guys. तो हम लोग लेके गए, लेकिन people neither trusted him or us to produce it or do anything with it. Then we thought let's have a proof of concept. लोगों को बताते हैं कि at least 8 million 2 million लोग हमको रोज देखते हैं, तो अगर उतने लोग आप ला सकते तो at least these kind of things will get commissioned, and that has been the journey so far. अब I'm going to take this to you next क्योंकि कल भी मुझे जब स्क्रीनिंग पर हम मिले थे तब पौला ने कहा था कि एक्चुअली सारंग ने कहा था कि अभय ने खुद ये सीरीज जो है प्लान की थी या इसका कॉन्सेप्ट दिया था ताकि वो खुद को कास्ट कर पाए मेन लीड में। ऑब्वियसली ये जोक था, लेकिन नहीं ये सही है। ओके ये सही है। बढ़िया बढ़िया। लेकिन मुझे बताओ कि with you and Lalit and हमारे साथ आलोक अभी नहीं है, but the 3 boys जिनके साथ ही कहानी आगे बढ़ती है। Talk to me about the दिल चाहता है for 2021, okay? क्योंकि अभी इस फिल्म के 20 साल पूरे हुए हैं and जो लोग अभी ये शो देखेंगे, अगर आपने देख ली है, you know what I'm talking about. If you haven't seen it, I don't want to spoil it for you guys, but this sort of like एक updated 2021 version of दिल चाहता है। Talk to me about these 3 boys. क्या होता है यार जब 3 लोग होते हैं? Why does it work? Why does this premise work? ऐसे क्यों होता है कि 3 एक तिगड़ी होनी चाहिए? I don't know. First of all, I think my generation and few मतलब थोड़ा आगे पीछे सबके लिए दिल चाहता है became this cult film and everybody related to it in some or the other way. The friendship, the stylization of it, the music of it, everything. But of course उसमें prominently था कि आमिर खान is the hero of the film. Even on the poster उसका फोटो सबसे बड़ा है, उसके बाद अक्षय खन्ना का है, फिर सैफ अली खान का है. That's so they are also very clear who is the most important, and that was one of the things which we really wanted to explore with this, that the friendship is not in isolation. Like there's no one main person in a friendship of 3. So that's what in a way we were trying to explore. And a few days back Sarang was saying that actually every actor has the equal number of scenes, so we have made it like that, really equal. And doing it with these 2 guys was like fantastic because it's like a dream come true. Like all the actors, they want to do a boxer film, like that all the actors want to do a buddy film with 2 more guys. Yeah. So and like were you always friends? मुझे बताओ तुम तीनों की दोस्ती ऑफ स्क्रीन भी है, because ऐसे लगता है कि तुम तीनों actually दोस्त हो। हाँ, Alok and me, we go long back. Like we have almost done like 15-20 plays together. The only feature film he directed, I acted in it. Yeah. So we knew each other quite well. Lalit was the new entry in that way, but he himself is phenomenal. He also accepted us in a very beautiful way. We also gelled up quite nicely, and I think the friendship will grow crazily in season 2 now, because now we are there. Nice. ललित का क्या है ना, वो मार के दोस्ती करवा लेता है तुमसे। हाँ, वो थोड़ा डोमिनेटिंग है वैसे। मेरी थोड़ी दहशत रहती थी थोड़ी सेट पे।
ललित, मुझे बताना है क्योंकि तुम्हें कि इस इंटरव्यू के नीचे बहुत सारे थर्स्ट ट्रैप वाले कमेंट्स आने वाले हैं। तुम्हें हमने स्विमिंग पूल में देखा है तो बड़ा मजा आया है, कान को बड़ा मजा आया है तुम्हें देखकर स्विमिंग पूल में। ललित टी शर्ट निकाल के मेरी जो interview देना हालत थोड़ा हुई सा, थी please। मेरी जो हालत हुई थी वो मैं यही बता रहा था, मैं किसी और को भी यही बता रहा था कि ये पहले तो दो दोस्तों की कहानी थी और इसमें एक आइटम सॉन्ग था, लेकिन एन वक्त पे आइटम सॉन्ग निकाल दिया और मेरा कैरेक्टर ऐड कर दिया। तो वो आइटम सॉन्ग को जो करना था वही कर रहा हूँ टी शर्ट निकाल के। अरे अरे, but I must say कि तुम्हारा जो आर्क है इस स्टोरी में, I think it was beautiful, it was very sensitive, and I think कहते हैं ना कमिंग ऑफ एज फिल्मों में अक्सर we do the lost part very well, लेकिन the growing up bit, which is the tough one, the catharsis वाला episode, I think that to me was my favorite episode. Do you want to take me through that scene जहाँ पर तुम ड्रम बजा रहे थे और तुम्हें रोना था क्योंकि suddenly, and that's what I love about this show, right? Like it starts off being the funniest, breeziest show, and by the time you're in episode 4 and 5, you're just like, मुझे शांतिवन की जरूरत है। Actually, that's the beauty of this series. जी हाँ। कि आपको सिर्फ मजा 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 ऐसे नहीं, तो वो सीरियसली आपको सोचने पे भी मजबूर कर देता है। और वो बैलेंस भी काफी अच्छा है कि वो ह्यूमर एक साथ चल रहा है अपने अपनी जगह पे, और सीरियसली आपको सोचने पे भी वो आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं, ये सिर्फ मजा मस्ती नहीं चल रही है। Fantastic. वो वाला सीन जहाँ पर there's a scene, I won't tell too much about it because I don't want people to, अगर लोग Drumming? एक ही नहीं है तो मैं रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन ललित वो एक सीन है, in you know which scene I'm talking about, it is in episode 4 जहाँ पर तुम स्विमिंग पूल के अंदर हो, do you want, are you a trained swimmer? Like मुझे पहले ये बताओ। नो, मुझे स्विमिंग नहीं आती। Okay, how interesting. But वो सीन शूट करने में तुम्हें कुछ याद आ रहा है? Because I feel like that was truly something that either you have to be a very good actor, वो तो A, then you have to be a very good swimmer, and then you have to have great control of your breathing. ये कैसे कर लिया तुमने? He just has a नहीं, good नहीं। body, that's all. That's why you believe him. Everybody is looking at his body, no one is looking at his आइटम skills. सॉन्ग। Okay, you guys can get I through. over here I'll like to interrupt because Paula directed that particular sequence of swimming, and she used to work in the swimming pool when she was young. So उसने देखा था कैसे होता है, and then he's a very good actor, so उसने करवाया. That's the main part. I was feeling pretty confident that no matter how bad of a swimmer he is, we can do something with him. But he worked quite hard also and took a lot of swimming lessons to make sure that we could cover it up. Yeah, There's an sorry, go ahead. There's an ongoing joke about this series. Like yes, show में you know that there is a lot of driving that Shreyas, which is Abhay does, and he didn't know how to drive before the show. Then Shikha speaks in Marathi. She had to speak in Marathi. Lalit is a swimming coach. He didn't know how to swim. And Alok was supposed to be a flirt, and he didn't know how to flirt. So Amazing. Which I think is a lie. I think Alok is a very sneaky flirt. Nice. Very लेकिन smooth. उसकी जरूरत नहीं थी शो के लिए, हमें अपफ्रंट फ्लर्ट करने वाला चाहिए था। Actually, ये मेरा अगला सवाल होने वाला था, because the obvious ones, like I didn't know, about Abhay, and I did not know this about Lalit. तो ये शायद आपने मुझे बताया, लेकिन एक चीज जो मैं शिखा के बारे में जानती हूँ is that Shikha is not a native Marathi speaker, right? And the first question that मैं sorry Shikha, I know we've been talking for a while, and I really want to talk to you as well. So just give me a moment, let me get this in. But Sarang, I want to ask you that, why do you need a Shikha Talsania in a universe like this? Number one, because so she's not a native, Marathi speaker. Okay. The role I know कि ये गुजराती लड़की है जिसको मराठी बोलना होता है, और वो आपने justify भी किया है कि वो क्यों बोल रही है, तो फिर कशाला, you could have had a Marathi speaker. So what happened was, like, we needed a right energy. हम लोगों का बात हुआ था, and मैं आज सुबह ही Paula को I was telling her that when I moved to Bombay, there were some friends जो अभी भी मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे, who never judged me
for being vernacular, who never saw me the way I dress up and all is little odd. Like people who know me that I'm not a normal looking person. So she has never judged me for anything. She judges no one, first of all. Then she's extremely calm. Like when I remember when we asked her to send an audition, हमने उससे कार वाला सीन करवाया था. एक बार आप कार में ट्रैवल करके देखो, she'll be doing 10,000 things. Like she'll be drinking her coffee, she'll be calling someone, she'll be chatting, she'll be changing music. लेकिन कभी भी कार यहाँ से वहाँ नहीं होता. वो ऐसा normal जैसे like always in meditative space. She's very centered, and that grounded energy is something that we wanted for Neha. That's what we saw in her, and हम लोग reference में दे रहे थे कि वो शिखा तलसानिया जैसा vibe चाहिए. तो हमने सोचा उसी को पूछ के देखते हैं क्या होता है, and then this happened. No, and that's wonderful, because honestly, and that's what the show is trying to do, right? You're not limiting it to language. You know, कहानी ज़्यादा important है, किस language में है ये उतना important नहीं है, and this sort of acceptance of people who are trying, right? And I think that's beautiful, because कहीं ना कहीं ये philosophy show की भी है. That's beautiful. शिखा, मुझे बताओ, as an actor, do you think that not knowing a language, and I know कि हम दोनों मुंबई की लड़कियां हैं तो हमें मराठी तो आती है, you know, लेकिन जब बात होती है कि हमें परफॉर्म करना है और एक्टिंग के साथ एक दूसरी भाषा में बोलना है, वही did you ever feel कि तुम out of depth थी उस टाइम पर? Fully, throughout, till date. Even when I watch it now, I feel like, what am I saying? First, I have to say, you guys have said very sweet things like that. Don't do like this, yeah, on the interview and all. Little like shy is happening now. No, you know, the thing is कि जब उनका call आया था, मैं बहुत ही excited हो गई थी, because again, we've been friends for a very long time. We worked together for a very long time, but I've also been like the #1 fangirl of their work since they started. Yeah. And the fact that हम मराठी समझ सकते हैं क्योंकि हम मुंबई में पले बड़े हैं, पर बोलने में इतनी आसानी नहीं होती है, तो मुझे लगा कि मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं मिलेगा कि शायद मेरे को एक इंग्लिश स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग रोल दे देंगे शायद. You know, you keep hoping when you're working, when all your friends are doing such fantastic work, you're hoping that you can collaborate at some point or the other. I was very, 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 very afraid with the script. And Sarang and Paula have got many calls and many voice notes about the same. क्योंकि सीखना एक चीज है जो हम स्कूल में सीखते हैं और जो एक्चुअली बोली जाती है मराठी, वो बहुत ही डिफरेंट है. कि मैंने आहे कभी नहीं बोला है, and that's all I kept writing in school, and that's all I kept saying in school. And you know, to learn that and perform and drive a car with a camera on it and many other things, and you know, I felt that I would be holding the other actors back because I can't improvise a scene. If they don't give me the right cue, I'll just be like, I'll just say my line anyway, even if it doesn't make sense. So I was really, really afraid of that. But I have to say that all the 3 boys, the entire cast and crew, the 2 of them, and Chetan, who is also one of the writers of Shantit Kranti, Chetan has been he's the best coach. Like tomorrow अगर कोई मुझे स्क्रिप्ट का चेक दे दे कि तेलुगु फिल्म कर ले, मैं उससे बोलूंगी तो तू सीख ले और तू मुझे सिखा. Because he's fantastic. And they were really, really patient with me, and they were, it's been an absolute joy. No, it's fantastic, because I agree when you say that, you know, you could be a good actor, but if you don't have the tools, then you know बाकी के जो scenes हैं, energies हैं. Also, I'd like to believe कि you know budget ज़्यादा नहीं होता. You know, and that's the mark of people who have been dealing in new media, right? Like हम लोग वीडियो कैसे बनाते हैं अपने घर में, you know, हम लोग काम चला लेते हैं. सारंग, मुझे बताओ कि you know, you can't believe that you pulled something off. Is there a moment or a scene that you can't believe you pulled off in the sort of constraints that you might have had? Yeah. Many of them. One of the biggest, I think, scenes that we pulled off is the train ka chase sequence, which is in the trailer too. So without giving it away, there's like a point where the car and wo jo Dil Chahta Hai ka homage scene hai, like a dedication to that. All at one point wanted to do that in life, right? Like a train ja raha hai, usse gaadi ja raha hai, we chase it. So when we were planning to shoot this scene, of course permission तो था रोड का, पर ट्रेन वेन बुक करने का पैसा नहीं था. इतना तो बजट चांस ही नहीं कि साथ में 10 बार घुमाओ ट्रेन. तो
हम शोले थोड़ी ना बना रहे हैं भाई। हाँ, तो हम लोग बोले कि अब उधर से ट्रेन जब आएगा उधर से गाड़ी छोड़ेंगे और मैच कर लेंगे वो। एंड दिस गाय डिडंट नो हाउ टू ड्राइव, सो ही हैड टू ड्राइव एट 80 स्पीड। हमने मैं वो रोड पे हमेशा जाता था, सो आई न्यू दैट रोड कि उधर से एक स्लोप है, स्लोप पे थोड़ा पेस भी मिलता है, उधर से गाड़ी आती है कामशेत स्टेशन से, एंड इट विल मैच इफ ही डज इट रियली वेल। तो हमें पता चला वहां से 9 लोकल्स भागती है, उसमें से एक तो पकड़ लेंगे, 9 बार ट्राई करेंगे, एक तो पकड़ लेंगे। Right before the shoot, one day before, we came to know because of COVID there are only 2 trains that run over there, one in the morning and one in the evening. Great. And so we just had one chance to do this, so we got like 4 cameras instead of 2 cameras that we were doing with. And हमने सब प्लान किया, वॉकी टॉकी पे कोई उधर स्टेशन पे खड़ा है, कोई किसी हिल पे ताक रहा है किधर ट्रेन पहुंची, some people are sitting with them in the car hiding, some people are ahead blocking the traffic or something. And then it was one of the most I mean it was a proper rush, like our blood was like probably pumping at a speed that it has never pumped at. And hum log and that happened, that shot happened beautifully, like we got everything that needed, aisa slow motion mein idhar se train udhar se train sab jagah se shoot kar liya. And in the evening कि एक और बार एक ट्रेन आ रही है तो ड्रोन का शॉट भी ले लेंगे, एंड वी वर सो श्योर दैट इट्स नॉट गोना हैपन, एंड वी गेव अप ऑन इट। 5:30 का ट्रेन था, 5:45 तक नहीं आया, ट्रेन ही नहीं आया, लेट चल रहा था। एंड एट वन पॉइंट वी ऑल गेव अप एंड इट वाज द लास्ट शॉट, सो हम लोग पैकअप करने निकलने वाले थे, तभी दूर से ट्रेन की आवाज आती है, एंड द ड्रोन नीचे तब तक आ गया है, तो कोई ड्रोन हवा में फेंक रहा है, कोई चिल्ला रहा है। उसमें Alok had forgotten whether he was wearing a cap in the scene or not, so he's not getting in the car, and वो सब rush में then finally the car came, the train came, and we got those beautiful shots, like, and it just 2 takes and without budget. I just want to give a round of applause. This is amazing. This is so great. This is so good. Abhay, मुझे जानना है कि there's of course you write comedy and you write the lines, and usually humor जो है वो लिखा होता है, लेकिन do you remember, क्योंकि I'd like to believe that this is a show जहाँ पर it has been more than just what's written on the script, right? Y'all are also individuals with personalities, y'all are also friends. Was there any improvisation जिसके बारे में आपको हमारे साथ शेयर करना है? कुछ याद आ रहा है जो एक सीन या एक लाइन जो तो आपको याद है कि इम्प्रोवाइज था? I think a better question would be कि which scene without improvisation happened, without adding happened, because that would be a better question to ask. Because the thing is, I was so scared when you said a better question would be, and I was like, really, you're going to tell me this on my own interview? No. वो जो बोलते हैं कि हरामी एक्टर, तो हम सब उस तरह के हैं। मतलब क्या है कि अगर किसी को पता है कि आलोक को जोक है, तो हम दोनों को लगेगा यार हमारे पास जोक नहीं है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। एंड देयर वाज अ वेरी तो सब कोई अपना अपना कुछ तो ऐड कर देता। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, देयर वाज दिस जस्ट वन विजुअल व्हिच वाज रिटन दैट Shreyas is carrying bags of dinar and prasanna. There was this one line, and now that has become into 3.5 minute scene. It's not just a scene, they improvised it so much. Plus the music director, when he was listening to that scene, he said like, yaar is pe bahut अच्छा गाना जाएगा, so he made a song out of it, and it has released as an OST. So it's literally like एक line था, इन लोगों ने एक scene बना दिया, actually mini series था, इन्होंने web series बनाया उसका। Amazing. Lalit, तुम्हारा favorite scene with the boys मुझे बताओ। अरे यार बहुत सारे वैसे, मतलब मुझे लगता है फर्स्ट एपिसोड में जो लास्ट वाला सीन है, जो वन शॉट है, जहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार गोवा का ट्रिप हम लोग प्लान करते हैं, वो वाला सीन था। वो एक ही टेक हम लोगों ने किया, राइट? हाँ सारा, वन टेक एंड वन शॉट। तो और उसमें भी काफी इम्प्रोवाइजेशन है, लेकिन तब तक वो हमने काफी एंड में शूट किया है वो सीन, तो तब तक हमारी दोस्ती भी काफी 4D हो गई थी, ज्यादा गहरी हो गई। और हम लोग काफी चिल थे, तो वो सीन मुझे काफी पसंद है। No, and I think I would like to just शिखा के पास और एक one सीन, small thing.
just mention this small thing. बोलिए ना. एक चीज जो बहुत मुझे लगता है कि बाकी सेट्स पे जब जाते हैं तो काफी एक्टर्स के साथ थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है. यू वांट टू वन अप समवन या फिर यू आर लुकिंग फॉर अटेंशन. एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हियर कि हर कोई आपके लिए स्पेस तैयार कर रहा था और आप दूसरे के लिए स्पेस तैयार करने की कोशिश कर रहे थे. तो उसी की वजह से मतलब जो रिदम है, जो इम्प्रोवाइजेशन है, वो इतना अच्छे से बैठ पाया. तो विच वाज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस शो, आई थिंक सो. And it shows. वो फाइट वाला जो सीक्वेंस है, फाइट सीक्वेंस जो है हमारा 5th एपिसोड में, Yeah. वो भी काफी, और उसमें ऐसा था कि सारंग को वो हमने उसके कितने 4 या 5 टेक किए, लेकिन वो पूरा सीन हमने शुरू से अंत तक मतलब पूरा नाटक की तरह, मतलब ड्रामा की तरह वैसे हम लोगों ने परफॉर्म किया उसे. तो हर बार किसी एक को we didn't cut into lines wise cutting नहीं किया. They had to do that the entire from the top to the end each time. And I think that thing that shows, yeah, बिल्कुल. बोलिए ना ललित. तो वही उसमें भी वो अगर एक दूसरे के साथ वो उतनी दोस्ती भी दिखनी चाहिए, उतना वो टाइमिंग का भी सीन है. सिर्फ ह्यूमर में आपको टाइमिंग की जरूरत है ऐसा नहीं है. तो इस तरह के सीन में भी आपको टाइमिंग की जरूरत ज्यादा होती है. तो वो भी एक काफी मेरा फेवरेट सीन है उस पूरे सीरीज का. Paul, I'd love to hear you on this actually at this point, because this starts out being this breezy, like 3 boys. I mean, we've seen this so many times, right? Like we are that Dil Chahta Hai generation. We kind of know what's going to happen. We know every road trip is going to change the characters who take that road trip. But what I loved is the sort of sensitivity with which even the female characters have been portrayed in this show. And I think that to me was a total win. So thank you so much for that. None of the women characters were irritating, annoying, wrong, or just completely 2D. Usually that happens. When you want to show boys in a good light, you have to show women in a bad light. And that happened even in but that didn't happen with the show, which I think is a huge win. And also the fact that in today's time, क्योंकि ये शो जो है भले ही कहते हैं कि हर आइडिया का एक वक्त होता है, राइट? आई थिंक दैट आइडियाज टाइम इज इन 2021. ट्रस्ट मी. अगर ये 2 साल पहले रिलीज होती शायद इतनी मुझे रेलेवेंट नहीं लगती. लेकिन आज के इस माहौल में हम सब यही तो ढूंढ रहे हैं. हमारे मन में वी आर ऑल एट बे, एंड वी आई थिंक गोइंग इनवर्ड्स इज दिस जर्नी दैट लॉट ऑफ अस हैव टेकन इन 2021, बिकॉज हमें ये शांति क्रांति चाहिए, बॉस. So, Paula, could you talk to me about how important it was to have this sort of sense of like this, it has to be right, it has to be correct, and at the same time, it has to have a sense of like, overall goodness. Please talk to me about that. I think one of the things that we try to be very careful about from the development stage is that in contrast to say some of like maybe like a Dil Chahta Hai or ZNMD, these boys go through their internal transformation not because of some external woman or some person forcing them to change or make a decision in their life. And going into the spirituality and the looking inward side of it, that was also something which was important for us to portray in a way that wasn't preachy. One thing which Sarang and I kept on discussing is that we do have some scenes where there's a lot of conversation about what is the purpose of the meditation and how it's supposed to change you, and each of the characters gets a scene like that. But when you're hearing this kind of philosophy, unless you are ready to experience it yourself and you're in that mental place to absorb it, it just kind of goes over your head. And for all these boys, they might get that philosophy in a scene, but much later on they actually experience it. And finding a way to make a comedy and an emotional and a friendship show in a meditation center, it has a lot of opportunity to go in a wrong space, go into a preachy space and all that. And for us, the core was really just, why don't we approach these characters as human beings with gray shades? They can make a wrong joke and they can feel bad about it and all of these things. And all of the characters, I think, deserve
that kind of an approach. So Paula, of course, like as it was Marathi drafts, we used to write drafts and give it to her in English translation to read it, because she was going to be a co-director on this. And the first thing that came from her side, and a lot of credit goes to Anusha, because there was a girl in the writer's room, which helped a lot. Yes. And the reason, like what Paula first reaction that she said, she gave, and even our script editor Sai, both of them said, like, despite reading a boy story, this seems like a feminist show. Like that at the end of it, like the boys don't go after their women in a wrong way. Kaku does call out Prasanna many times about how he's thinking like a man. Then in the ashram too, like, or people who, now I don't want to give spoilers, but there is a beautiful scene with Shikha and me in the 5th episode, and it talks a lot about how a man and woman relationship should be. Can be. Yeah. Trying to distance the show from that Bollywood style melodrama of, you know, oh, this is a life-changing thing, and just saying, you know, if the three boys are going on a road trip, it need not be a cinematic, It should be cinematic. It should be melodramatic. What I guess we're trying to say is that it should be a realistic road trip story. Yeah. Sorry about that. Yes. No, and I think kudos to that. And I think having, I mean, you know, हमने ये शब्द बहुत सुना है ना पिछले 2 सालों में, because wokeness का एक you know pantheon, wokeness के pantheon में toxic masculinity पहले but इस toxic masculinity से हमें दूर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. You know, I think it's hilarious and it's got heart. So that's the 2 things that I'd like to say. Shanti Kranti, you know, will leave you with. So I would recommend जितने भी लोग मेरा ये interview देख रहे हैं, प्लीज ये शो देखिए, बहुत ही मजेदार शो है. सारंग पौला, थैंक यू सो मच मेरे शो पर आने के लिए और ये शो हमें देने के लिए. एंड क्योंकि अभय ने तो अनाउंस कर ही दिया कि सीक्वल है, सो हम अगली बार बात करेंगे सीक्वल के बारे में. बिल्कुल. मैं हर जगह पे अनाउंस कर रहा हूँ, ऑफिशियल कुछ नहीं है, मैं उन पे प्रेशर डाल रहा हूँ कि बनाओ करके. प्लीज बनाइए. और अभय नेहा शांतिवन से निकलने वाली है. अगर तुम लोग कहीं और जा रहे हो, शांतिवन नहीं, मुझे वो इंक्लूड नहीं कर रहे. अभी राइटर जैसा मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ, अभी वो उनका चलने वाला है. तो सारंग को बोल रही है. I look forward to it. सारंग पौला, बहुत बहुत शुक्रिया ये शो में देने के लिए. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.